फिर से स्वागत है आपके हमारे वीडियो में। आज हम आपको दिखाएंगे कि मारुति सुजुकी के इग्निस में जीपीएस कैसे इंस्टॉल होता है। ये इग्निस पुश बटन वाली है। आज हम इस इग्निस में बिना वायर कटिंग के जीपीएस इंस्टॉल करेंगे और उसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। It's as different as you can be. तो आपने देखा इस इग्निस में जीपीएस इंस्टॉल कैसे हुआ। ये वाइनएक्स का स्टैंडर्ड जीपीएस था जो कि हमने फ्यूज़ बॉक्स से कनेक्ट किया। और ऐसे ही जानकारी भरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।